So guys, first of all, welcome to lecture number 2 for our intermediate microeconomics 1 course. So let's discuss the agenda for today's class. So we will begin, we've already started our discussion related to budget constraints. So we will continue with that discussion. So first thing that we are going to understand is budget line जो होती है, how does that change? What are the things which could bring changes in budget line? Apart from that, we will understand what is the concept of numeraire. Apart from that, we will also try to understand, अभी तक जो भी हमने थोड़ा बहुत discussion किया है, you might be wondering that we've only talked about 2 goods. So why are we just talking about 2 goods? Is that enough to just talk about 2 goods, or should we talk more about 3 goods, 4 goods, 5 goods? Because in reality, we are going to not have just 2 goods, right? So is the 2 goods case enough, or should we talk more about 3 goods, 4 goods, 5 goods, 6 goods? Yeah, 2 good case एक general scenario है. So we will talk about that also. Why 2 goods? And apart from that, we will also try to do some basic terminologies I would like to tell you. And along the way, we will try to do some problems. All right. So this is going to be our agenda in this particular session. Fine. Okay. Ma'am, is this the whole chapter 6 or a part of chapter 6? Chapter 2. Sorry, chapter 2. Yep, ma'am. Budget constraint. No, there are more things. More things. There are more. Okay. Yeah. Okay. But I'm talking about today's class. Yeah. Sure. Yeah. And the reference, in case anybody is wondering, the reference for this is chapter number 2, budget constraint. The book is Varian. This is your reference material if you want to study that. Okay, chalo. So, हमने देखा था कि what is my budget line? First thing, what is my budget line? So if Some set of bundles that cost exactly the income. Perfect. So the set of bundles which are exactly costing me my income that I'm earning, right? And then what was my budget set? It was the set of all possible bundles that I can potentially buy with whatever income I have, right? Yes, ma'am. है ना? तो अगर if I have two goods and let's say good 1 and good 2, okay? And the amount of good that I'm consuming of good 1 is x1. The amount of good 2 that I'm consuming is x2. And the price of the goods are P1 and P2. And my income is M. Then what is my budget line? P1 plus 2P2 is equal to P1 M. plus P2 equals to M. ऐसा? या Ma'am, something P1 else? plus 2P2. Sorry, फिर से बोलो. Ma'am, P1 plus 2P2 is equal to M. Okay, actually, guys, this is not the quantity. I was just trying to tell you. This is first good and second good. Oh, okay, ma'am. Then P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. Yeah, okay. P1 x1 plus P2 x2 is equals to M. Everybody clear with this budget line, right? Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ कि ये जो बजट लाइन है, ये कौन सी चीजों की वजह से चेंज हो सकती है? अब प्लीज नोट कि there is a concept of variables and there is a concept of parameters. एक चीज होती है parameters, एक चीज होती है variable. अब जैसे इसमें दो चीजें हैं, एक चीज हो गई x1 and x2,
अब ये क्या चीज हो गई? दिस इज द कंजम्पशन बंडल, राइट? तो अब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ P1, P2 and M, I will have different consumption bundles that I will be able to consume, right? एंड जैसे ही मैं P1, P2 और M की कोई भी वैल्यू चेंज कर दूंगी, तो वो जो कंजम्पशन बंडल जो मैं कंज्यूम कर पाऊंगी वो बदल जाएंगे ना, राइट? Yes. Yes. तो यहाँ पे जो P1, P2 एंड M है, इनको बोलते हैं पैरामीटर्स. And this concept that I'm trying to tell you, this is a very general concept. This is applicable in mathematics also. This is applicable in statistics also. ये बहुत general concept है. ये हर subject में apply होता है. तो ऐसी ऐसी variables, ऐसी चीजें जो पूरे system को define कर देती हैं. तो अगर एक particular value of P1, एक particular value of P2 और एक particular value of M दे दी जाए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 x2 बहुत अलग 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 वैल्यू ले सकता है. तो x1 x2 तो अभी भी वेरिएबल है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ P1, P2 एंड M. तो यहाँ पे हमारा जो x1 और x2 है वो नॉर्मल वेरिएबल है, और ये P1, P2 और M है, ये मेरे पैरामीटर्स हैं जो मेरे सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मेरी बजट लाइन चेंज होती है, या मैं अगर ये बात करूं कि व्हेन डज माय बजट लाइन चेंज, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? When the parameters change. व्हेन माय पैरामीटर्स आर गोइंग टू चेंज. जब भी मेरे पैरामीटर में से कोई भी एक वैल्यू भी चेंज हो जाती है, या तो मेरे प्राइस P1 में बदलाव हो रहा है, या मेरे प्राइस P2 में बदलाव हो रहा है, या मेरी इनकम M में बदलाव हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि माय बजट लाइन इज गोइंग टू चेंज. आर वी क्लियर विद दैट? Yes. Are we talking about shift in the budget line or movement along the budget line? that we will see now. Movement, अगर देखो हम क्या बोल रहे हैं कि बजट लाइन चेंज होना. अब मान लो मेरी बजट लाइन ये है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल. अब मैं अगर यहां से यहां मूव कर रही हूं, तो मेरी बजट लाइन थोड़ी ना चेंज हुई. माय बजट लाइन इज द सेम. Yes, ma'am. It's just that ki maybe you are consuming here, but maybe now you're consuming here. So the question of budget line changing doesn't arise here, Yes, ma'am. right? So we are Yes. asking the question ki when does a budget line change? So either move. So कुछ भी displacement हुई, either it moves, पहले मान लो ये थी, either it moves like this, or it moves like this, or it moves like this. Anything, something has to happen, right? So we are trying to ask that question. So हमारा question था, how the budget line changes. तो अब उसके आंसर को हमने एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? whenever there is a change in my parameters, right? या तो मेरे प्राइसेस में चेंज हो जाए, या मेरी इनकम में चेंज हो जाए, या तो देखो एक चीज में चेंज हो जाए, या किसी दो चीज में चेंज हो जाए, या तीनों चीजों में चेंज हो जाए. बेसिकली इन तीनों में से कोई भी एक, जैसे भी आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसमें जो भी चेंज होगा, तो उसकी वजह से मेरी जो बजट लाइन है दैट इज गोइंग टू चेंज. आर वी ओके विद दैट स्टेटमेंट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, Yes. ma'am. नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि वो चेंजेस किस तरीके से होंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू टेक सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स and see how those changes pan out. Okay, so first of all, whenever there are changes in parameters, and my parameters are P1, comma P2, comma M. ठीक है. So let's try to understand everything bit by bit. First of all, let's try to keep our focus on income, right? Income. Let's say M. So let's see, suppose only M changes. Change in M.
So I will give you two situations, okay? Let's say initially P1 is equals to 1, P2 is equals to 2, and income is equals to 10. This is your first situation, or maybe you can say initial. And your final situation is that P1, nothing happens to your prices, and your income, whatever you say, increases, decreases. Let's say it increases, okay? It's 20. Now, what do you have to do? Your goal is to make budget lines and see for yourself कि ये कैसी दिखती हैं, ठीक है? So let's try to do this. First case में, what is going to be my budget line? Tell me. Ma'am, we'll plot the points like. So first of all, tell me what is my budget line in equation format. Oh, okay. Then it would be 1. Ma'am, what's the quantity? x1 plus 2x2. क्वांटिटी आप फिक्स नहीं कर सकते ना, क्वांटिटी ही तो वेरिएबल है, प्राइस तो हमने फिक्स कर दिया. अच्छा, okay, yes, ma'am. है ना? Right. Yeah. Yes, ma'am. x1 plus 2x2 is equal to 10. Equals to 10. परफेक्ट. एक हो गई Yes. फर्स्ट बजट लाइन. सेकंड केस में क्या होगा? x1 plus 2x2 equals to 20. परफेक्ट. दिस इज भव्या, राइट? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड. ठीक है, तो ये बजट लाइन होगी. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट नाउ. चलो, ओके. तो अब बजट लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं? हमने सीखा था कैसे ड्रॉ करते हैं. सिंपल सा लॉजिक है क्या? By intercept, we'll find the x1. परफेक्ट. सो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है. इक्वेशन आए इस तरीके से, आप क्या करो, जब x2 की वैल्यू 0 होगी, दिस इज x2, दिस इज x1, ओके. जब x2 की वैल्यू 0 होगी तो x1 की वैल्यू क्या होगी? 10. 10. तो मैं उसको यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ. दिस इज 10, ओके. परफेक्ट. नाउ जब x1 की वैल्यू 0 होगी तो x2 की वैल्यू कितनी होगी? 5. 5. तो मैं उसको यहाँ पे 5 प्लॉट कर देती हूँ इधर. And for making a straight line, I just need 2 points. I will just join these 2 points, and this is my budget line. Right? Yes, ma'am. Can you tell me that हमने जब हम लोग normally P1 x1 plus P2 x2 is equals to m, उस फॉर्मेट में जब हम लोग बजट लाइन लिख रहे थे, तो हमने बात की थी कि स्लोप क्या होती है, वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, एंड हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है. Ma'am, slope is minus p1 by p2, Very and nice. vertical intercept would be p1 m by p2, and horizontal would be m by p1. Perfect. We all remember this? यही था ना? What does slope tell you? Suppose the magnitude of slope is very high. मान लो एक लाइन है जिसका स्लोप है 2 और एक लाइन है जिसका स्लोप है 1. So what will be the meaning of that? Ma'am, that the 2 is more steeper than More 1. steeper. So more steeper का क्या मतलब है कि मान लो 1 वाली लाइन ऐसी है तो 2 वाली लाइन बहुत ज्यादा स्टीप होगी. So steep और फ्लैट को आप कैसे समझ सकते हो? It's like एक माउंटेन पे चढ़ाई करनी है. You have to go up a mountain. The steeper it is, the more difficult it is for you to climb it. So it's more difficult to climb this mountain, right? As compared to this. So the higher, the bigger is the magnitude of the slope, the steeper is the line. ये तो हो गया पॉजिटिव स्लोप. अब नेगेटिव के टर्म्स में कैसा हो जाएगा ये? नेगेटिव स्लोप का मतलब ये मान लो -2 और ये हो जाएगा 1. क्योंकि अब पहाड़ पे जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, जितना मुश्किल है स्टीप पहाड़ पे चढ़ना, उतना ही डर भी लगता है जब आप एक स्टीप पहाड़ से नीचे उतरते हो तब, राइट?
So this is steeper. This is flatter magnitude wise. Fine. Are we clear with this concept? So ma'am, in the negative case, like if we take the slope as -2 and -1, so ma'am, -2 will be more steeper. Yeah, -2 is steeper. Yes. Okay. Yeah. So for steepness, you just have to check the magnitude of the slope. And Okay, the ma'am, positive, irrespective of the sign, irrespective. yeah, magnitude meaning the amount, Yes, ma'am. right? And positive and negative will tell you the direction. Is it going upwards or is it going downwards? Yes, ma'am. Got it. ठीक है? So हाँ, तो ये हो गई मेरी पहली बजट लाइन. अब मेरी दूसरी बजट लाइन को मैं कैसे प्लॉट करूं? अब एक बात बताओ, जब when this is 0, what happens to x1? 20. 20. 20, very nice. So I will put 20 here. And when this is 0, what is x2? 10. So I will put 10 here. Right? So now what I will do is I'll join these 2 points and I will get my slope. So this is my slope. अब ये मैंने थोड़ा दिखने में अच्छी नहीं लग रही है. I will adjust it. ठीक है, थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसी ये होनी चाहिए. ठीक है. Yes, ma'am. Now tell me what is the slope of this line and what is the slope of this line? Minus P1 by P2 Yes, ma'am. for both the lines, and P1 by P2 for both these lines is the same. Yes, ma'am. So what does that mean? Both these lines have to be parallel to each other. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर slope same होता है, if slope is same, what does that mean? Slope is same. What does that mean? Lines are parallel. Slope is same का मतलब होता है या तो lines एक दूसरे पे merge कर रही हैं या फिर वो बिल्कुल parallel है. Lines are concurrent or parallel. Sorry, not concurrent. वो मतलब बिल्कुल overlapping है. Sorry for that word. Lines are parallel. Right? तो यहां से हमने क्या समझा कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? मेरी जो लाइन पहले थी उसी स्लोप की लाइन बनी एक और, लेकिन हम लोग आउटवर्ड शिफ्ट हो गए. राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? So if there is only an income increase, then my budget line will shift outwards parallelly. And if there is an income decrease, तो मान लो इनिशियली आप यहां थे, इनिशियल सिचुएशन ये थी, फाइनल सिचुएशन मान लो ये हो जाती, तो आप यहां से यहां चले जाते. राइट? है कि नहीं? स्टार्टिंग पॉइंट, अपने Yes, फाइनल ma'am. पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लो और अपने इनिशियल पॉइंट को अपना फाइनल पॉइंट मान लो, तो क्या होता? शुरुआत में हम यहां होते, फिर हम लोग अल्टीमेटली यहां पे हो जाते. तो अगर आपकी इनकम डिक्रीज हुई और आपके प्राइसेस वैसे ही हैं, देन व्हाट डज दैट लीड टू? दैट लीड्स टू अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन इनवर्ड्स. राइट? Yes, ma'am. So what is my conclusion from this? So मैं एक फाइनल कंक्लूजन अगर लिखना चाहूँ इस पूरे डिस्कशन से, तो वो मैं क्या कर सकती हूँ? Ma'am, that if M changes, then there will be a parallel shift either outward or inward. So if there is an increase in income, what does that lead to? Outward shift So on budget line. it will lead to an outward, but it is a particular type of outward shift, which is outward
parallel Yes, ma'am. shift of budget line. And a decrease in income only will lead to an inward parallel shift of budget line, right? ठीक है, this is fine. Are we all good with this? Yes, ma'am. चलो, very nice. Let's move on to the next thing. तो we saw कि ठीक है, अगर सिर्फ इनकम के चेंज को हमने अंडरस्टैंड किया तो हमें समझ में आ गया पैरेलल शिफ्ट अपवर्ड आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स होता है. अब लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस इफ देयर इज चेंजेस इन प्राइसेस ओनली. तो आप अपनी फेवरेट प्राइस पिक करो, जो आपको चाहिए, जो आपको समझना है, और हम P1 P2 जो आप बोलोगे हम उसको एनालाइज करेंगे. एंड द अदर प्राइस इज ऑल्सो सिमिलर. So that will be, the other price will be your homework. So you pick which one you want. P1 or P2? P1. P1. P1 आप कर लेना या P2 करें, देख लो जो भी बोलोगे आप. Change in what? चलो आपने P1 बोल दिया तो आप P1 ही कर लेते. ठीक है. अच्छा, तो मेरी बजट लाइन क्या थी? My budget line was this: P1 X1 plus P2 X2 is equals to M. ठीक है. अच्छा, इस बार बिना नंबर्स के देखते हैं. पहले हमने नंबर्स का यूज करके चीजें समझी, अब देखते हैं कि अगर बिना नंबर्स के चीजें समझने चले हम लोग, क्या हमें समझ में आता है. ठीक है. तो अब ये बताओ कि प्राइस इंक्रीज करें या डिक्रीज करें. जो आप बोलोगे वो करेंगे. बताओ. सपोज व्हाट हैपेंस, प्राइस इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. सपोज प्राइस इंक्रीजेस, प्राइसेस इंक्रीज. तो प्राइस इंक्रीज मतलब नया P1 बना होगा, जिसको मैं बोल रही हूं P1 स्टार, राइट. और P1 स्टार बिकॉज इंक्रीज हुआ है, तो मेरे को आप ये बताओ कि P1 स्टार और P1 उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. P1 star will be greater than P1. परफेक्ट, वेरी गुड. तो हमें ये चीज समझ में आ गई. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो ठीक है, अब मेरे पास दो बजट लाइंस हैं बनाने को, राइट. एक बजट लाइन तो ये है मेरे पास जो मुझे ड्रॉ करनी है. इनिशियली ये थी, और फाइनल जो है, फाइनल वो क्या हो गई. What will be my final budget line? My income is exactly the same. My P2 is exactly the same. The only change is P1. So what is my new budget line? P1 star X1 Very nice. plus P2 X2 equals Perfect. to M. Very good. तो ये हो गई मेरी फाइनल बजट लाइन. देखो, हमें जनरल चीजों के साथ भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें एग्जैक्ट नंबर्स दिए जाएं. एंड नंबर्स के साथ डील करना इजी होता है. इट्स इजी टू डील विद नंबर्स. यू कैन ट्राई टू पुट देम, वैल्यूज निकाल सकते हो. बट वी शुड ऑल्सो हैव अ सेंस ऑफ डीलिंग विद सच फॉर्मूलाज. सो वी विल कीप डूइंग दीज थिंग्स एज वेल. तो वी have our objective very, very clear. This is one budget line that we have to draw. This is another budget line that we have to draw. Let's draw it. Let's draw that. ठीक है, चलो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो ओके, नाउ हमारा लॉजिक बिल्कुल सेम है. हमें इसको ड्रॉ करना है, राइट. सो when x2 is 0, what happens to x1?
M by P1. M by M P1. by P1. This is exactly what my horizontal intercept is, right? So let's say this is M by P1, right? This is okay with everyone? Fine. Yes, ma'am. चलो अब दूसरी चीज what okay, this is fine. हाँ, when this is 0, what is x2? M by P2. M by P2. ठीक है, very nice. So M by P2. ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया. अब हमने जो है इसको ड्रॉ कर लिया. We'll just join these 2 points. Now we'll do the same exercise here as well. So what happens here? When you put 0 here, what do you get? M by M P1 by star. P1 star. M by P1 star. Very nice. तो अब ये देखो M by P1 था यहाँ पे और यहाँ पे M by P1 star. तो ये तो दोनों डिफरेंट है, राइट? Yes, ma'am. Now what is my next step? My next step is to think कि ठीक है, I don't have the exact numbers, but at least मैं इतना तो देख सकती हूँ ना कि जो मेरा पॉइंट है वो इस पॉइंट के इस तरफ आएगा या वो इस पॉइंट के इस तरफ आएगा, ताकि मैं अप्रोप्रिएटली एक पॉइंट यहाँ बनाऊं या फिर मैं ये पॉइंट यहाँ बनाऊं. दैट इज अ गुड इनफ थिंग टू डू, राइट? Yes. Yes, ma'am. है ना? तो माय ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू सी कि ये जो पॉइंट है ये मैं इसके रेफरेंस में ये बड़ा पॉइंट आ रहा है या ये इसके रेफरेंस में छोटा पॉइंट आ रहा है. तो अब आप ये बताओ, दिस इज बिगर और दिस इज बिगर. नोट दैट Ma'am, M upon P1 star is smaller. m दोनों में सेम है. ठीक है, तो विच इज स्मॉलर? M by P1 star. This is small. Why this is small? Denominator bigger. Yes, So ma'am. Numerator same. वेरी नाइस. तो अगर आपका न्यूमरेटर बिल्कुल सेम होता है तो जिस भी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर बड़ा होता है दैट क्वांटिटी इज ओवरऑल स्मॉलर, राइट? क्योंकि P1 star is bigger. P1 star is bigger. So because denominator is bigger, so overall this number is smaller. So if this number is smaller, so where should I put it? Here or here? Left side or right side? Left. Left side. So because of that logic, so M by P1 star is less than M by P1 since P1 star is greater than P1. ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि भाई प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया है. तो इस वजह से हमने क्या किया, वी पुट दिस पॉइंट हियर. अब वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द मैग्नीट्यूड. वी आर नॉट सेइंग कि ये पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है. वो हम तब बता पाते इफ वी वुड हैव हैड द एग्जैक्ट नंबर्स, राइट? बट वी आर जस्ट डूइंग इट इन जनरल नाउ, विच इज M by P1 star. Fine. This point is clear. All good, everybody? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, very good. Now, what about this? If you put this 0, what do you get here? M by P2. M by P2. Now, where should I put M by P2? This is exactly the same, M by P2, Yes, ma'am. right? So, M by P2 तो बिल्कुल same है, which is this. So, now what is my line? This. तो मेरी बजट लाइन ने कैसे मूवमेंट की? Like this, right? So what happened? There was an inward shift. There was a inward shift, right? Yes, ma'am. And what happened? एक pivot हुआ, एक point पे हम stabilized रहे. Yes, ma'am. So what happens? So इसकी वजह से क्या हुआ? So ये point मेरा point of
इस पॉइंट के अराउंड रोटेट किया मैंने, और मेरे Yes, ma'am. प्राइसेस, और बिकॉज मेरे प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेरे कोई भी एक प्राइस मान लो बढ़ गया है, तो मेरी चॉइसेस कम हो जाएंगी ना। अब यही सोचो, अब बिल्कुल एकदम बिल्कुल, अब बिल्कुल देसी तरीके से सोचना है क्या, कि भाई आपकी इनकम सेम है, लेकिन कि जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते थे उसमें से एक प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो आपकी जिंदगी में ऑप्शंस कम हुए या ज्यादा हो गए? कम हुए। कम हो गए। जो कि यहीं पे यहाँ पे भी यही हुआ है ना, कि पहले इनकी जिंदगी में इतने ऑप्शंस थे, अब इनकी जिंदगी में ऑप्शंस थोड़े से पहले जितने थे उसमें से कम हो गए, राइट? यही हुआ है कि नहीं? यस मैम। अब ऊपर ऊपर वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, कि प्राइसेस उतने ही थे, इनकम बढ़ गई थी, तो पहले जो कंज्यूम कर रहे थे वो तो कर ही सकते हो, बट अब आपकी पॉसिबिलिटीज और बढ़ गई, राइट? तो वो अब पहले जो कर रहे थे वो तो कंज्यूम कर ही सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा और एक्सपैंडेड वर्जन कंज्यूम कर पा रहे हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो हमने क्या देखा, अगर P1 इंक्रीज होता है तो देर इज अ इनवर्ड शिफ्ट। Excuse me, ma'am. Can you just explain what you told for the first case? This here. Yes, ma'am. Yeah, so I was saying, because the prices are exactly the same and your income has gone up, so you are able to afford whatever you were affording earlier. Along with that, you have some more options now. Okay. So this is what I was saying. Okay. Okay, this is okay. And similarly, मान लो अब मैं ये P1 स्टार की जगह बोलती कि प्राइस P2 चेंज हुआ, तो क्या हो जाता? ये वाला पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहता, यस मैम। एंड ये क्या हो जाता, ये इस तरीके से हो जाता, यस मैम। ठीक है? दिस इज वन सिचुएशन, राइट? अब मैं ये बोल दूं कि P1 इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है, तो क्या होता? आप यहां आने की बजाय यहां आ जाते, Yes, और ma'am. और फिर आपका पॉइंट, आपका जो बजट लाइन है वो इस तरीके से चेंज हो जाती, राइट? So whenever you think about this, you can think ki, okay, if prices have gone down, income is the same. It's like effectively you have more money to spend on other goods. So it's your possibilities which are going up, right? But overall, broadly, what do we see? Ki when there are changes in prices, my slope is changing na. यहाँ पे स्लोप अलग थी, यहाँ पे स्लोप अलग हो गई है, राइट? यस मैम। राइट? सो whenever there are changes in prices, अब मुझे ये नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि प्राइस सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, या हो सकता है दोनों प्राइसेस चेंज हो जाएं। मान लो दोनों प्राइसेस सेम प्रपोर्शन में चेंज हुए, तो उससे क्या होगा? सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल, सपोज मान लो इनिशियल सिचुएशन इज दिस, दैट P1 is equals to 1, P2 is equals to 2, and income is equals to 10. Okay, now we are saying prices have changed. So P1 is equals to 2 and P2 is also equal, has changed and it has become 4, and income is exactly the same. Now what happens? What is my budget line here? x1 plus 2 x2 is equal to 10. Is equals to 10. And now what is this? 2x1 plus 2x1 plus 4x2 2x1 equals to plus 10. 4x2 is equals to 10. Right? Can Yes, you ma'am. tell me, is the slope of this line and this line, are they same or different? They are the same. Yes, ma'am. They are parallel. Yes. They are the same, Yes, ma'am. right? So we can also have a situation when prices are changing, but slopes may not change, right? But that can only and only happen in what case?
when prices are changing by same proportion, right? Yes, ma'am. यहाँ पे सेम प्रोपोर्शन उन्होंने मेंटेन किया है. अच्छा ये बताओ, प्राइसेस यहाँ पे डबल हुए हैं. डबलिंग द प्राइसेस, अगर मैं ये सिचुएशन करती, मान लो ये सिचुएशन है, दिस सिचुएशन एग्जैक्टली रिजेंबल्स व्हाट अदर सिचुएशन? दिस एग्जैक्टली रिजेंबल्स दिस सिचुएशन ना, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता लेकिन मेरी इनकम आधी हो जाती. इस केस में Yes, मेरी ma'am. बजट लाइन क्या बनती? Inward. अच्छा, x1 plus 2x2 is equal to 5. और ये लाइन भी तो यही है ना, अगर आप 2 कॉमन लेते हो और कैंसिल करते हो तो ये लाइन भी यही बनती है. Yes, ma'am. है कि नहीं? Yes, ma'am. तो when your prices change by same proportion, it is like your income is getting reduced. तो इस चीज को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि why do we say that inflation, why do people don't like inflation? Why do your parents don't like inflation? And rising prices of the goods. So because in the entire economy, inflation is like हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है. Yes, ma'am. So प्राइस पहले जो 1 था और 2 था, और मान लो इन्फ्लेशन 100% है सपोज, तो दैट मीन्स पहले जो चीज 1 रुपए में आती थी अब वो 2 रुपए में आएगी. पहले जो चीज 2 रुपए में आती थी अब वो डबल हो गया, तो मतलब 4 रुपए में आएगी. और अगर इंसान 10 रुपए ही कमा रहा है तो असेंशियली उसकी इनकम की वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपीज. Yes, ma'am. So when your prices double, or if all the prices are multiplied by the same number, it is like your income is getting divided by that number, which we see here also happening, right? So यहाँ पे prices were getting multiplied by 2. So it was essentially like the situation when prices are the same but your income is 5. So this is essentially what happens during inflation also, कि जो अगर inflation में हर चीज की prices rise, so the value of the money income that you are earning, it gets reduced. And that is why people ask for hikes. That is why people want their income to be linked with inflation. So बहुत जगह पे जो hikes होती हैं या appraisals होते हैं, they are linked with inflation rate. So if you see some of the companies that are in India, they are US based, or some of the companies are. So let me just give you an example. There's a company called UBS. UBS, let me just tell you, I think it's a company based in Switzerland. UBS. The full form is, it's a bank basically. It's Union Bank of Switzerland. Okay, so UBS Bank has offices in multiple places in India also. So some of my peers were working there, so they used to tell me that स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत मिनिमम होती है. जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी हाई होती है, 5%, 6%, 7%. तो इन्फ्लेशन इंडियन जो कंपनीज हैं वो जो हाइक्स देती हैं वो 10% होता है या 5% होता है या 6%, इस तरीके से. बट बिकॉज वहां पे इन्फ्लेशन नहीं है, 0% या 2% है, तो their salary hikes are according to their country's inflation. So they used to always say ki, okay, this is not happening, and their inflation is always very low. So that is why that is impacting their salaries. So that is how everything is linked. Yes, Ridhima. Ma'am, I had one question. Yeah. Like in recent news, we saw that US economic growth, it has slowed down, but inflation is still growing. So, ma'am, what could be the probable reason for that? Multiple reasons. It's not very straightforward to answer that. Artificially,
सी अब इसमें जो है ना, आइडियली हमें क्या लगता है, वी फील दैट अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है तो Inflation should be slowed down, right? Like we studied in the previous lectures as well. but there are cases जहां पे you have high unemployment rate. Okay, you have high unemployment rate and you have high inflation rate and you have a stagnant economy जिसको बोलते हैं stagflation. So एक बार आप इस पे रीड करना. What is stagflation? When does this happen? What could be the possible causes of it? And this is not the first time which has happened in US. There are previous episodes of stagflation in the US. So try to read this term, stagflation. Stagnant economy plus inflation. That is why people get confused कि अरे ये क्या हो रहा है? Stagnant economy के साथ inflation. This is something which doesn't fit my mind. So this is a phenomena which has happened previously as well. So एक बारी आप उस पे पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है? Okay, ma'am. Perfect. Yes, ma'am. All right. So guys, this is clear ना? Prices change का impact हमें समझ में आ गया. If somebody asks you to draw these things, will you be able to? Yes, ma'am. Right? तो एक मैं general conclusion अगर निकालने की कोशिश करूँ, if we try to draw some general conclusion regarding what happens when there are changes in price. So we can say that changes in price leads to changes in slope, right? Changes in prices will lead to changes in slope of budget line. I will also mention the specific case unless they are proportional changes, so that, you know, we are just exiting that special case that we've just discussed here, unless they are proportional. And then we can see that, okay, and उसके अलावा फिर, you know, if we try to mix up things that, you know, prices also change, income also change, then you can always see that there could be multiple things which can be happening. There will be shift, there will be tilting, all of these things can mix and match, and then we can see something happening, right? So income change भी हो रही है, prices change भी हो रहे हैं, तो shift भी होगा, फिर changes भी होंगे. So उसकी वजह से ultimately finally result क्या आ रहा है? That is something which we cannot comment on right now. But we know how to draw the line equation on a graph. We know the horizontal intercept, we know the vertical intercept, we know the slope. So we will be able to do that. Is that all right? Yes, ma'am. है ना? चलो, perfect. All right. तो एक काम करते हैं, let's try to do one problem related to this. ठीक है, करते हैं. उससे हमें सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलो. And this is basically from your workbook, and this is also to promote कि you should start doing the workbook problems. The problems are very, very simple, but they will help you get the concepts very easily. So एक chapter में there are at least, I think, 7-8 questions. So the kind of concepts that we are doing, with these concepts only, you will be able to start attempting the questions. Okay, ma'am, will you please repeat the steepness part? So steepness of slope, is that what you're saying, Chetan? Slope regarding the, okay, yeah. So what I was saying is that the magnitude of slope tells you or gives you the information regarding the steepness. So the higher is the magnitude of the slope, that means the line is more steep.
So I could have multiple situations like this, like this, like this, like this. So this is the most steepest line. Out of these 4 lines, this is the most steepest line. So iski jo bhi slope hogi, uska magnitude सबसे बड़ा होगा. And because these are all positively sloped lines, तो सब में positive ही number लगा हुआ है. And then this, and then this, and then this. On a similar logic, on a similar basis, I can clearly see that यहाँ पे मान लो I make 4 lines like this. So they are all negatively sloped because they're downward sloping. And out of these, मुझे पता है कि ये सबसे ज्यादा steep है. अगर आपको कोई भी चीज steep है या flat है वो बतानी है, just imagine it's a mountain and either you're going up the mountain or you're traveling back from the mountain. जितना डिफिकल्ट हो या जितनी स्पीड से आप नीचे आ रहे हो वो उतना ज्यादा स्टीप है. सो दिस इज द मोस्ट स्टीप, this is the most steep to go up, this is the most steep to go down, right? So this is the most steepest line, negatively sloped, so iska magnitude sabse bada hoga. And because it's downward sloping, so there will be a negative sign in front of it. The magnitude will be the biggest. This is what I was telling. So let's say, just to give numbers, this is 2, this is 1, this is 0.5, this is 0.3. And this could be -2, -1, -0.5, -0.3, like this. So ma'am, did we say that steepness of slope create a problem? Problem in what? Oh, I don't remember saying that. Ma'am, in the previous case of price change, slope was increasing, right? Which one? This one. Yes, slope is increasing. So if you tell here, in this case, the slope is P1 by P2 minus, and here the slope was minus P1 star by P2. So if you check the magnitude, because P1 star is bigger, so this number is bigger magnitude wise, right? Yes. Yeah. Correct. Chetan, is that okay? Ma'am, steepness means more slope, means the market rate of exchange is more. Chetan, can you please unmute yourself and talk in one go because it's taking a lot of time. Okay, in your laptop, there is no mic. Okay. Yeah, okay. I'll clear it later. No, it's okay. So ठीक है, more slope means market rate of exchange is more. Okay. So why does that create a problem? So it just means that if something is becoming expensive, it just means कि अगर उसकी एक quantity आपको consume करनी है तो आपको दूसरे good का बहुत ज़्यादा quantity give up करना पड़ेगा. So that product has become expensive. That's all. Right? The market is taking higher amount from you in order to exchange the other good. That's all. ठीक है? Okay, fine. All right. Chalo ji, let's move on. Let's try to see this problem. So guys, this is from your workbook, workouts may say this is one problem. So it's very simple. You will also feel while doing it, it's very simple. But this is just to promote the usage of workout problems. And then,
You should also start doing it on your own. So let's try to read it and let's see what happens. Chalo. So you have an income of $40 to spend on two commodities, and commodity one costs $10 per unit. Commodity two costs $5 per unit. Write down the budget constraint. Very simple. चलो बताओ जी. दो commodities हैं, C1 C2 बोल देती हूँ मैं इनको. Commodity one जो है इसका कॉस्ट है $10 पर यूनिट. इसका कॉस्ट है या प्राइस है कॉस्ट $5 पर यूनिट. ठीक है. तो अब एंड आपकी इनकम जो है वो है $40. ठीक है. तो अब बजट इक्वेशन बता दो जरा. 10C1 plus 5C2 is equal to 40. परफेक्ट. एक सेकेंड, फिर बताओ फिर बताओ. अच्छा ठीक है, इसको हम लोग X1. x1 और x2 यूज कर लेते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो. Yes, ma'am. क्वांटिटीज में x1 क्वांटिटी है कमोडिटी C1 की, एंड x2 क्वांटिटी है कमोडिटी C2 की. अब क्या होगा मेरा बजट लाइन? Oh, 10x1 plus 5x2 is equal to 40. परफेक्ट. तो इन्होंने एक चीज ये बोली. एवरीबडी ओके विद दिस? Yes, ma'am. ठीक है. अनन्या, आर्याकी, भव्या, चेतन, दुर्गा, Yes. काव्या, मंजू, नर्मदा, प्राची, रिया, तानिया, वानी. Yes, ma'am. वी आर ऑल फीमेल डोमिनेटेड, हाँ, है ना? Yes, ma'am. वी जस्ट हैव वन मेल स्टूडेंट हियर, आई थिंक. या जस्ट वन. Ma'am, female supremacy. No, I think it just shows sincerity that females tend to plan things better, and they are more into planning things and thinking ahead. So right now the colleges haven't started, right? So I mean that could be the reason. Females usually tend to plan things ahead, and they like things planned कि ठीक है इस तरीके से होगा ऐसे होगा. Sincerity also is something which is very naturally I feel more in girls than boys. Anyways, ठीक है. All right, ठीक है. If you spend all your income on commodity one, how much could you buy? So if you're spending everything on X1, first good, what is the maximum amount that you could buy? 4. 4 units. So it is like finding your horizontal intercept, right? Similar Yes, question. ma'am. Part number C, what is it saying? If you spend all your income on commodity 2, how much could you buy? 8. 8. 8 units. And then what are they asking? Use blue ink to draw your budget line in the graph. तो कोई एक ग्राफ है. इन्होंने ग्राफ बनाया था लेकिन उसमें ग्राफ उन्होंने बना दिया था तो इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया है. बट लेट मी जस्ट मेक इट फॉर यू. सो ठीक है. तो फिर मैं कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट्स पुट करूं? फर्स्ट इज maximum amount of first commodity is 4 and second commodity is 8, right? So I'll join these 2 points, 8 and 4, and we will join these 2 points. और इन्होंने बोला है कि blue ink से बनाना है तो ये लो blue ink से बना दिया. This is my budget line, right?
Guys, is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, next part number D. What is it saying? It is saying the following, that suppose the price of commodity 1 falls to $5. अब पहले इसका प्राइस 10 था, अब ये 5 हो गया है. While everything else stays the same, write down the new budget equation. तो अब सब कुछ सेम था, सिर्फ प्राइस 5 हो गया है, तो अब नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? What will be the new equation? 5x1 plus 5x2 is equal to 40. Perfect. ठीक है. फिर Ma'am, then we have to plot the graph as well. So we'll write like the x-axis will shift and it will tilt towards 8x1. Right. तो फिर इसका मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे the maximum amount of x2 is 8, the maximum amount of x1 is also 8. Yes, ma'am. Right? तो पहले 8 था, तो ये तो 8 ही रहेगा, लेकिन अब नया जो है वो भी 8 हो जाएगा. Yes, ma'am. Right? और इसको किससे बनाना है? रेड इंक से. तो इसको रेड इंक से बना देते हैं. तो दिस इज माय न्यू बजट लाइन. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चला कि अब यहाँ पे मेरा प्राइस जो चेंज हुआ वो P1 चेंज हुआ, और जो हमने अभी जस्ट केस डिस्कस किया था उसमें प्राइसेस इंक्रीज, इसमें प्राइस डिक्रीज्ड. सो इसीलिए इट वाज लाइक दिस इन द एग्जांपल दैट वी स्टडीड ऊपर. इसमें दैट चेंज्ड इनसाइड, दिस चेंज्ड आउटवर्ड्स. राइट? Yes, ma'am. तो यहां तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है ना. तो अब ई पार्ट क्या बोल रहा है? ई पार्ट बोल रहा है कि सपोज, ओके वेयर इज दिस, मैम एक बार डी पार्ट दोबारा समझा दो. एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू दैट. हाँ, डी पार्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन. सो डी पार्ट में हमने क्या बोला, देखो कि मेरा प्राइस जो है पहले 10 था, अब वो 10 की जगह 5 हो गया है. राइट? तो पहली जो मेरी इक्वेशन थी 10x1 प्लस 5x2 इज इक्वल्स टू 40, वो क्या हो गई है? 5x1 प्लस 5x2 इज इक्वल्स टू 40. यहां तक हमें समझ आ गया? यस मैम. ठीक है. तो अब हमें ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट निकाल लेंगे. राइट? तो वो कैसे निकालेंगे कि जब ये 0 होगा तो x1 कितना, और जब ये 0 होगा तो x2 कितना. तो दोनों की क्वांटिटी कितनी आ गई? 8 and 8. राइट? तो यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे भी 8. तो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. यस मैम. और पुराने केस में वो कितना आया था? 4 and 8. तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8. इस तरीके से बन गया था. राइट? चलो, E part, let's see E part. Now, what is E part saying? E part is saying the following. E part is saying that suppose that the amount that you are allowed to spend falls to, guys, there is one more thing. There is a statement that it's spending falls to, spending falls to something and spending falls by something. What is the difference between these two? Ma'am, the spending falls to means that this is the amount that is exactly given, the required resultant amount, and falls by is that the ratio, the rate by which it is falling. तो बेसिकली मान लो मेरी दोनों सिचुएशन में इनिशियल इनकम 100 है, और मैं बोल रही हूँ कि मेरी स्पेंडिंग, या फिर स्पेंडिंग बोल रही हूँ, इनकम बोल देती हूँ.
इनकम फॉल्स टू 30, इनकम फॉल्स बाय 30। तो मुझे फाइनल इनकम बताओ दोनों केस में। मैम फॉल्स टू में तो 30 ही होगी। मैम फॉल्स बाय में 70 हो जाएगी। परफेक्ट। तो इन चीजों का जो है बिल्कुल ध्यान रखना है कि फॉल्स टू मतलब कि वो गिर के इतनी हो गई है, इट हैज बिकम दैट अमाउंट, ठीक है। एंड फॉल्स बाय कि इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, सो देव गिवन यू द अमाउंट बाय विच इट हैज फॉलन। सो व्हाट इज द अमाउंट नाउ, दैट इज अपॉन यू टू कैलकुलेट. So here what have they told you, that you are allowed, so the amount that you are allowed to spend falls to $30. So initially your income was 40. Now your income, or maybe the amount that you are allowed to spend, that is 30 only. So that amount is 30. And the price of both the commodities remain at 5. So write down your budget equation. So price of first good is 5, price of second good is also 5, but the amount of money that you can spend is 30. So now what is your equation? 5x1 plus 5x2 equals to 30. Perfect. And how do I draw this? Use black ink for this. So maximum, so x1, what is the value of x1 when x2 is 0? 6. And what is the value of x2 when x1 is 0? 6. So basically what I will do is 6 and 6, right? And I'll join these two. ठीक है? So far so good till part E. Everybody is okay? Yes, ma'am. Chalo, let's see part number F now. ठीक है. What is part number F saying? Let's see. Part number F is saying the following. On your diagram, use blue ink to shade in the area which is representing the commodity bundles that you can afford with the budget in part E, but could not afford to buy with budget in part A. So try to understand what they are saying. They are saying the following, that on your diagram, use blue ink to shade the area representing the commodity bundles that you can afford with the budget in part E, but could not afford with budget in part A. इसका मतलब जो बजट ई में आपको सिचुएशन बताई गई है उसके साथ वो अफोर्डेबल है, बट बजट ए में जो आपके साथ सिचुएशन थी उसमें वो अफोर्डेबल नहीं था. इसका मतलब बजट ए में, फर्स्ट पार्ट नंबर ए में जो आपके पास पैसे थे और जो प्राइसेस थे उसमें आप उनको नहीं खरीद सकते थे, लेकिन पार्ट ई में जो इनकम और जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से आप उनको खरीद सकते हो. सो नाउ यू हैव टू डू दैट. सो मैं ये जो डायग्राम्स हैं इसमें ए बी सी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. सो दिस पार्ट वाज पार्ट नंबर ए, this was part number B, and this is part number C. So you have to, acha sorry, this is part number A, and sorry, I did, and then this was part number D. The red one is part number D. And this is part number E. ठीक है? तो पार्ट नंबर E के हिसाब से जो है आप अफोर्ड कर सकते हो, बट पार्ट नंबर ए के हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो एक बात बताओ मुझे, पार्ट नंबर ई के हिसाब से आप क्या क्या अफोर्ड कर सकते हो, वो कैसे पता चलेगा? जो उसकी बजट सेट में है, राइट? Yes, ma'am. तो इसका मतलब पार्ट नंबर ई के हिसाब से आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग दैट इज इनसाइड दिस ट्रायंगल एंड ऑल्सो ऑन द लाइंस, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिमिलरली पार्ट नंबर ए की बजट लाइन और प्राइसेस के हिसाब से आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग विच इज इन दिस ट्रायंगल. Yes, ma'am. So now what are they asking me? Ki please tell me what is that area
which you can afford using E parts budget but not using A parts budget. So कौन सा एरिया A पार्ट के बजट के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है लेकिन E पार्ट के बजट के हिसाब से अफोर्डेबल नहीं है? इट इज And the दिस एरिया area, ना. yes, ma'am, 4 and 6. Yes, ma'am. तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये मैं बजट ई वाले सिचुएशन के हिसाब से तो आई कैन बाय, बट ए सिचुएशन के हिसाब से आई कैन नॉट बाय. यही बोला है ना उन्होंने. तो Yes, व्हाट डिड ma'am. दे से कि ई पार्ट के हिसाब से यू कैन बाय बट ए पार्ट के हिसाब से यू कैन नॉट बाय. सो ए पार्ट के हिसाब, सो वो पार्ट जिसको मैं ई पार्ट के हिसाब से खरीद सकती हूँ लेकिन ए पार्ट के हिसाब से नहीं खरीद सकती, वो यही तो एरिया है ना. राइट. Yes, ma'am. So I will shade this region. This is my region of interest. We will shade this region. Is that all right? This is clear with everyone? Yes, ma'am. ठीक है. चलो, moving on. Now, use black ink or pencil to shade in the area which represents commodity bundles that you could afford with the budget in part A but could not afford with budget in part E. Now you have to say the reverse. कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन से बंडल्स हैं जो आप बजट ए पार्ट ए के हिसाब से आप खरीद सकते थे लेकिन पार्ट ई के बजट के हिसाब से नहीं खरीद सकते. Ma'am, Ma'am, between the 6 and 8 on the Ma'am, board. वो 6 to 8 वाला जो एरिया. वो मैं अब पार्ट ए के हिसाब से तो खरीद सकती हूँ, ये वाला एरिया है, लेकिन पार्ट ई के हिसाब से मेरे बजट के वो बाहर है, तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा. राइट. तो उसको मुझे ब्लैक से शेड करना है थोड़ा सा, तो इट इज गोइंग टू बी दिस. राइट. So it's affordable by the budget of part A, but it is not affordable by the budget of part E. Is that Yes, all ma'am. right? ठीक है. Very good. So yeah, so this was your problem. So you could have managed this ना. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब इसी तरीके से जो है आगे आपको और प्रॉब्लम्स भी ट्राई करनी है अपने वर्कआउट्स में. आफ्टर दिस क्लास ट्राई टू ओपन, ट्राई टू सी क्वेश्चन. आई विल ऑल्सो शो यू another question. There was another question. See this question. We've done so many questions like this. So there was another question in your workout which is this. Draw the budget lines. Price दिए हुए, income दी हुई है. Price दिए हुए, income दी हुई है. Price दिए हुए, income दी हुई है. How do you make the budget line for part number D? I think you can make part A, B, C. How do you make the budget for part number D? If your prices are the same, P1 is equals to P2 and your income is 15 times P1. So what is your budget line? P1 x1 plus P1 x2 is equal to 15 P1. ओके परफेक्ट. सो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए सबसे पहले क्या करना है, लेट्स ट्राई विद द यूजुअल स्टफ. जो हमारी यूजुअल इनकम होती है वो ये होती है, बजट लाइन जो होती है वो ये होती है. लेट्स ट्राई टू राइट दैट एंड देन लेट्स ट्राई टू मेक ऑल द रिप्लेसमेंट्स. सो P1 x1 प्लस नाउ P1 x2 is equals to M. What is M? 15 times P1, right? ठीक है. Now how do you make this? And then x1 plus x2 in bracket and then P1 is equal to 15 P1. And So then it would be, the equation would be x1 plus x2 is equal to 15. and that is simple to make, right? Yes, ma'am.
So the equation finally becomes this: P1 x1 plus x2 is equals to 15 P1. If P1 is not equal to 0, which won't be, then you can cancel P1 from both sides, and then x1 plus x2 is equals to 15. So this is my budget line. So how will we draw it now? x1, x2. Then 15 is here, 15 is here, and this is my budget line, right? ठीक है? Yes, ma'am. So इस तरीके के बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू बजट लाइन. सो आई विल आस्क यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दी वर्कआउट प्रॉब्लम्स नाउ. ठीक है, पहले 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं क्लास में. ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 3. ओके, डू यू गाइज वांट अ ब्रेक और समथिंग? 5 minutes क्विक ब्रेक. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. We'll start in 5 minutes. Let's start at 12:20. Okay. All right. Are we all here? Yes, ma'am. Okay जी, चलो. So fine. अच्छा. So let's see. Let's move on. अच्छा, when you see and when you look closely the budget line ना, अगर आप budget line को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, we realize the following, that suppose my budget line is usually like this: P1 x1 plus P2 x2 is equals to M, right? This equation is exactly the same. Whatever this equation is, this is exactly the same as me writing something like this, that P1 x1 by P2 plus x2 is equals to M by P2. Or it is also like this: x1 plus P2 by P1 x2 is equals to M by P1. Or this is exactly like P1 by M x1 plus P2 by M x2 is equals to 1. Can you see that all these equations are the same, Yes, ma'am. right? So if I want to move from here to here, what have I done? I'm divided by P2 on both the sides. Divide by P2. If I have to move from here to here, what we have to do? Divide by P1. Divide by P1. If we have to move from the original equation to this, what do we have to do? Divide by M. Divide by M. तो इसका मतलब this equation is similar to this equation, is similar to this equation, is similar to this equation, right? Yes, ma'am. So usually, it is convenient for us to, consider. So this is just one case. This is another case. These are basically one single case when we are dividing by price. This is another case when we are dividing by income. So हमारे लिए एक convenient situation हो जाती है जब हम price से divide कर देते हैं. उससे हमारे पास एक special चीज निकल के आती है, which is something like this.
विच इज कि आपने यहाँ पे, क्या मैं इस चीज को ऐसे देख सकती हूँ क्या कि किसी एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो 1 हो गया है और दूसरी क्वांटिटी का जो प्राइस है वो P1/P2 है और मेरी इनकम M/P2 है? ऐसे भी हो सकता है ना ट्रीटमेंट। Yes, ma'am. तो अगर मैं मान लो किसी इंसान को बोलूं कि मेरा फर्स्ट गुड जो है उसका प्राइस है P1/P2, सेकेंड गुड का प्राइस है 1 और मेरी इनकम है M/P2, तो जो वो मेरे को बजट लाइन देगा वो यही तो होगी ना जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, Yes, ma'am. राइट। तो हमारे पास क्या होता है, जब भी आप किसी एक गुड का प्राइस यूनिटी ट्रीट करने लग जाते हो तो हम उस गुड को बोलते हैं न्यूमरेयर गुड। सो व्हाट एम आई सेइंग, व्हेन we set the price of a good to unity or 1, we often refer to that price as numeraire price, एंड न्यूमरेयर प्राइस का क्या मतलब है, न्यूमरेयर न्यूमरेयर प्राइस का मतलब है इट इज द प्राइस relative to which we are measuring the other prices and income। तो अब इस चीज का क्या मतलब है वो जरा ध्यान से समझो। पहली बात, पहला पॉइंट तो जो हमने इस्टेब्लिश किया वो क्या किया कि दिस बजट लाइन इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस बजट line, right? And then we said that here, what is the situation? Here we are making the price of this good as 1, the price of this good as P1/P2, and the income as M/P2, right? Yes, ma'am. So, whenever we are in such a situation, जब हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड के प्राइस को 1 के बराबर ट्रीट करने लग जाते हैं, सो दैट प्राइस इज कॉल्ड न्यूमरेयर प्राइस। एंड न्यूमरेयर प्राइस मतलब क्या, एक ऐसा प्राइस जिसके रिलेटिव में सारी चीजें मेजर करना हम लोग शुरू कर देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो आज के दिन हम लोग क्या किस तरीके से चीजें मेजर करते हैं, 1 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, राइट। मान लो हम लोग एवरीथिंग जो है, मान लो कोई एक पेन है, लेट्स से देयर इज अ पेन, इट कम्स इन 10 रुपीज, 10 रुपीज का एक पेन आता है, 1 पेन, ठीक है। और मान लो एक गुड है पेन, 1 गुड इज पेन, ठीक है, एंड 1 गुड इज नोटबुक, and my income is 100 rupees. Okay. This situation is clear. And आज से this is my first good, this is my second good. आज से हम पेन को न्यूमरेयर गुड की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब पेन का प्राइस जो है, जो भी पेन का प्राइस है वो मेरा प्राइस 1 ट्रीट किया जाएगा। तो पेन इज 1, पेन का प्राइस मतलब 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, और नोटबुक का प्राइस मान लो 20 रुपीज है, ठीक है। तो नाउ इफ 10 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 रुपी या 1 यूनिट, तो इसका मतलब नोटबुक इज वर्थ हाउ मेनी पेन्स, 100. नोटबुक इज Sorry, वर्थ notebook. हाउ मेनी पेन्स,
2 10 पेन। pence. एक पेन 10 रुपए में आता है, ठीक है। और आज से मैंने फरमान जारी कर दिया है कि 10 रुपए 1 रुपए के बराबर है, तो नोटबुक कितने रुपए में आएगी? Should we tell in terms of 10 rupees or 1 rupees? So 1 unit. Then Let's say, 10, let's 20 say, pence. let's say rupee. To avoid the confusion, let's say from today onwards, my currency is pen, and 10 rupees equals to 1 pen. My currency is 1 pen. So how much is my notebook worth? 2 pence. 2 pence. Pence. Yes, ma'am. 2 pence. This is 1 pen. And what is my income? 100. 100 rupees. And Yes. how many pence? 10 pence. 10 pence. So this is exactly what they mean here, ना? न्यूमरेटर प्राइस का क्या मतलब बताया उन्होंने? इट इज अ प्राइस relative to which we are measuring the other prices and income. So जिस भी गुड का प्राइस आप 1 ट्रीट कर रहे हो, what are you doing? So my P1 was 20 rupees, na? Notebook was 20. My pen was 10 rupees, right? My income was 100 rupees. My pen was 10 rupees. Are you understanding the logic now? Yes, ma'am. So क्या हुआ? अगर किसी भी एक गुड को हम लोग न्यूमरेटर गुड की तरह ट्रीट करते हैं, तो दैट मीन्स उसका प्राइस इज ट्रीटेड एज यूनिटी, and all the other prices are quoted in terms of relative to that commodity, and your income is also now quoted relative to that commodity. This is just to simplify your life. You will see later on why this simplifies your life in later discussions, but this is just to simplify कि आपको, you just need to understand this relative price, that's all. So, ma'am, here pen is the numerator good. Yes, pen is the numerator good. Yes, Okay. इसका प्राइस हमने 1 कर दिया. अब बाकी सारे गुड्स का प्राइस हम लोग पेन के रिलेटिव में बात करेंगे, और हमारी इनकम भी हम उसी के रिलेटिव में बात करेंगे. So, ma'am, income would also be 10 because Income is actually essentially my income is 100 only, बट मैं जिस तरीके से लिख रही हूं यहाँ पे, ऐसे ही तो लिख रही हूँ ना मैं. P1/P2 x1 plus x2 is equals to m divided by P2, right? yes, ma'am. So हम सिर्फ उसको इंटरप्रेट करें, we are just interpreting that. Okay, ma'am, got it. Right? So this is whenever you write something like this, that means pen is being, yeah, this good x2 is treated as a numerator good. The price is treated as 1, and the prices are now quoted in terms of P2. Income is also quoted in terms of P2. That's all. So numerator price is basically when you set the price of any good as 1. And it is basically the price relative to which we are measuring the other prices and income. Fine? Yes, ma'am. So this is the main funda. Is that okay, guys? All good? Yes, ma'am. Chalo, very nice. Okay. We could not come too much to the two good case and terminologies, but yes, we did some questions. Anyways, all right, fine. Okay, guys, we'll stop here for today, and we will continue our discussion tomorrow. Monday, we have a class, right? Tomorrow, 6 p.m., we are meeting again. But in the meantime, I will suggest you go through the workouts. You have the access to the drive link, right?
in case anybody has not requested that, feel free to do that. And we'll also just get back to you regarding the access. I just quickly, matlab, in case I take a very long time, just drop me a text, but I usually am available on my email. So I'll see you guys I'll see you guys tomorrow 6 p.m. and then we'll continue this discussion. ठीक है? सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? लैंग्वेज बैरियर, एनीथिंग, मैथ्स, इफ यू फील एनीथिंग, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है किसी को भी, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है? सो या, एंड हैप्पी बर्थडे टू अनन्या. ओके, ऑलराइट. Thank you. Thank you. Thank you guys. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Take care, guys. Thank you, ma'am. Thank you.